हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो एक्टिव टू पैसिव वॉइस फॉर क्लासेस 9 to 12 under the syllabus of Meghalaya Board of School Education. Part 1 I have already uploaded. Alright, and this is part 2, and here we will be learning present and past perfect tense. If you remember, in the previous video we had done present and past, simple present and past continuous tense, right, in part 1 of the video. The video was little long, but यहाँ पे जो है हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो दोनों वीडियोस मिला के जो है हम लोग प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट आज खत्म करने वाले हैं। दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस। ठीक है, एंड in the next video I will be bringing future tense for all of you. Alright, so let us learn present and perfect tenses here. Okay, present perfect tense and past perfect tense here. Now here there are few things to note down, and these are the few things that you need to note. Now here you see under present perfect tense you have has or have. Okay, so both has and have are applicable in present perfect tense, and the formula is how you have to use has or have, then it will be been, and then it will be verb third form. I have provided a formula also for all of you. मैंने एक फार्मूला भी प्रोवाइड किया है जो आपको नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज़ लगता है और हैव लगता है। नाउ आप लोग देखिए कि हैज़ और हैव का एप्लीकेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ हाउ और वेयर आर बोथ हैज़ एंड हैव यूज्ड। हैज़ और हैव कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं इस वीडियो में, इन दिस वीडियो आई विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल रिगार्डिंग द यूजेस और यूसेजेस ऑफ हैज़ एंड हैव. I have made a video on subject verb agreement which was basically for class 9, but I will provide the link in the description box. You can also check the I button on the top. यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाइए, इस आई बटन में मैं आपको एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा। आई विल प्रोवाइड अ प्लेलिस्ट ऑन ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. प्लीज क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट and just check that video, subject verb agreement part 1. There I have explained that where you have to use has and where you will have to use have. ठीक है, तो I will not go too much in detail in this video, and then we come to past perfect tense. In past perfect we have no jhamela, there is no issue because we use only had, and then we use been, and then we use verb third form. Now remember students, there is a difference between, in the previous video I had given examples with, I shown you examples with BEING. BEING is for ing verbs, calling, singing, dancing, playing, sleeping, all ing verbs we use BEING, being. Alright, and here whenever you have the mention of has, have and had, जब भी आपका have, has और had mention है तब आपको BEEN यूज़ करना है. There is a difference between the two words BEEN and BEING. BEING is for ing verbs and BEEN is for has, have and had. For present we use has and have, and for past we use past perfect we use had only. ठीक है, तो इस बीन और बीइंग का डिफरेंसेस आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में देखिएगा. और एक चीज़ क्या है, इन परफेक्ट टेंस इट इज़ वेरी यू हैव एन एडवांटेज इन परफेक्ट टेंसेस. रिमेंबर, इन वॉइस चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वर्ड, जब आप एक्टिव टू पैसिव, क्योंकि हम लोग एक्टिव टू पैसिव प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग एक्टिव टू पैसिव, व्हाट हैपन्स हियर इज दैट in your question, in any perfect tense, verb is already in the third form. तो आपको देखने का ज़रूरत नहीं है. verb जो है किसी भी perfect tense में, चाहे वो present perfect हो, चाहे वो past perfect हो, it can be future perfect also. In any perfect tense, verb already is in the third form. ठीक है, तो आप आंख बंद करके जो वर्ब आपको क्वेश्चन में दिखाई दे, द वर्ब दैट यू सी इन द क्वेश्चन, दैट वर्ब इज ऑलरेडी इन द थर्ड फॉर्म, सो यू नीड नॉट चेंज द वर्ब इन द थर्ड फॉर्म. यू कैन सिंपली राइट दैट वर्ब ओनली, एंड आई विल शो यू थ्रू एग्जाम्पल्स हाउ इट इज गोइंग टू बी. ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखिए. दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज फॉर assertive sentences, sentences ending with a full stop. जो sentences full stop से end हो, ये फॉर्मूला जो है उन सेंटेंसेस के लिए है, दो सेंटेंसेस दैट वुड एंड विद अ फुल स्टॉप, assertive सेंटेंस. तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं,
उस हिसाब से हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट टेंस में हैड रहा तो हम लोग हैड ही यूज़ करेंगे और कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे. देन वी आर गोइंग टू यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट. तो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो आई हैड शोन यू सर्टेन स्टेप्स. आपको अगर याद है तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि स्टेप 1 शुड बी व्हाट, स्टेप 2 शुड बी व्हाट, स्टेप 3 शुड बी व्हाट. ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, आप कभी यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स इन सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस इन द एग्जाम and even while you practice at home. Now these two sentences are actually interrogative sentences. This one and this one. These two sentences are actually interrogative sentences. अब interrogative sentence क्या होता है, आप कैसे समझेंगे? How will you understand this is interrogative sentence? By looking at the punctuation mark, which will be question mark. ठीक है? Now यहाँ पे क्या है? Let us look at the formula. Has, have, had. तो अगर if your question is asked with has, have or had, then in the answer also, in the passive voice also, you will have to use either has or have or had. ठीक है? And then object, and then been, and then verb third form. Here there will be a plus sign, plus by, plus subject. ठीक है? You can note down the formulas. Please note down the formulas very nicely. आप लोग फॉर्मूले जो मैंने दिए हैं सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए. प्लीज़ राइट इट डाउन. इंट्रोगेटिव वर्ड्स से अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो, इफ़ इन द एक्टिव वॉइस बिगिंस विथ इंट्रोगेटिव वर्ड. कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड है? मैंने आपको कहा था WH वर्ड. वाई, व्हेन, हाउ, आई एम सॉरी, यस, H word is how, when, which, what, etc, etc. These are all interrogative words. W words, why, when, which, what, okay, who, and here you have H word is how. ठीक है? Now out of all the interrogative words, who and whom ये थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर who रहा तो you have to start with by whom. Note it, okay? Out of all these interrogative words, only who and whom, in who and whom there will be a little change. कैसा change? अगर who है तो आपको by whom से start करना होगा, अगर whom है तो आपको who से start करना होगा. Please write it down. Please write it down. If your sentence begins with who, then you have to begin with by whom. If your sentence begins with, if in the active voice the sentence begins with whom, then you have to start the passive voice, your answer, with the word who. ये दोनों सिर्फ डिफरेंट हैं. बाकी जो है, अगर वाई है, इफ़ योर सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वाई तो यूज़ वाई. इफ़ इट स्टार्ट्स विथ व्हेन यू कैन यूज़ व्हेन. इफ़ इट स्टार्ट्स विथ विच यू कैन यूज़ विच. इफ़ इट स्टार्ट्स विथ व्हाट यू कैन यूज़ व्हाट ओनली, बट ओनली हु एंड हुम विल बी डिफरेंट. ठीक है? तो प्लीज़ नोट इट डाउन. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? तो यू हैव टू बिगिन, इफ़ योर सेंटेंस बिगिन्स विथ एन इंट्रोगेटिव वर्ड, यू हैव टू यूज़ दैट इंट्रोगेटिव वर्ड. देन हैज़, हैव और हैड, विच एवर इज एप्लीकेबल. इन तीनों में से जो भी एप्लीकेबल हो. तीनों तो एक साथ नहीं लिख सकती. यू कैन नॉट राइट ऑल द थ्री. ओके, मैं आपको एक साथ कराने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू टुगेदर, आई हैव मेड इन टू दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मूला, बट यू हैव टू यूज एनी वन. ठीक है? एंड देन यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट. ये है आपका फॉर्मूला. ठीक है? Let's go to the next page and look at some examples. The tailor has, now has and have, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलो. Let me take you a little back. Have and has is for which tense? Have and has is for present perfect tense. And only had is for past perfect tense. Remember. ठीक है? Now let's go to the examples. The tailor has stitched my shirt. What is the first step? The first step is find out the subject. Who is doing the action of stitching? The tailor. So the tailor is the subject. What is the target of the tailor? The target of the tailor is the shirt. Whose shirt? My shirt. This will be object. Okay, and then stitched is the verb. So I already told you that all the verbs will be in the third form only. तो
तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू think much of changing the verb into third form. It is already in third form in the question itself, and the same verb you will have to write in the answer also. Now what will you do first? Object सबसे पहले आएगा, object will come in the beginning, depending object, and because this is present perfect, so I already told you in present perfect you will either have to use has or you will have to use have. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे. माई शर्ट हैज़ एंड देन बीन, माई शर्ट हैज़ बीन स्टिच्ड बाय द टेलर. माई शर्ट हैज़ बीन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस द टेलर इज द सब्जेक्ट. माई शर्ट हैज़ बीन स्टिच्ड बाय द टेलर. Right? Next example, the hunter has killed the birds. The hunter is doing the action of killing. The hunter is the subject. Killing what? The birds. The birds becomes the object. Killed is the verb. This is already in third form, so there is no issue of thinking to change the form of the verb. You have to write the same verb in your answer also in the passive voice. हम लोग सबसे पहले what will we do first? We bring the object the birds. Now remember birds plural. जब plural होता है तो हम लोग क्या करते हैं? What do? We use have. For plural verbs under present perfect tense, for plural verbs we use have. ठीक है? And I am reminding you once again, I will provide the grammar and composition playlist in the description box and even in the I button also. Go there and check the topic called subject verb agreement. यहाँ पे आप जाइए, पूरा वीडियो इसके ऊपर देखिए, and then you will be able to understand the uses of has and have. ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. ठीक है, तो आप सेपरेटली वो वीडियो देख लीजिए. इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो, नॉट अ वेरी बिग वीडियो ऑल्सो. तो द बर्ड्स प्लूरल एंड देन हैव and then been and then killed plus by plus the subject. तो क्या हुआ sentence? The birds have been killed by the hunter. ठीक है, okay. Next, number 3. Has she done her homework? She is the subject because she is doing the action. So she is the subject. What is she doing? Her homework. Her homework becomes the object. Verb here is done. It's already in the third form. Now the thing is that the question has begun with has. अगर question has से शुरू हुआ है, let me take you a little back. And if we look at the formula, this particular question will apply. Because your question has begun with has, तो you have to begin your answer also with either has or have. Had तो past tense, past perfect tense के लिए, तो had हम लोग देखेंगे ही नहीं. And you see sentences beginning with had you will have to use had only. अगर had से कोई sentence start हुआ है तो use only had, nothing else. I am just talking of has and have here. So because your sentence has begun with has, so you also will have to start your sentence with either has or have. Now that depends on your object that you are bringing in the beginning. Object, the object her homework singular, तो has and then her homework, has plus object, has her homework been done by subject she this side. When she comes this side, she becomes her. तो has her homework been done by her, and then you have to put the question mark. ठीक है, okay. You can note down the formulas also, it will help you. Let's move on to question number 4. Why have you called me? Now sentence has begun with an interrogative word which is why, and I already told you that except for who and whom, if you have any other interrogative word, you use that same interrogative word and start your sentence. सिर्फ who और whom को छोड़ के बाकी जितने इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, अगर क्वेश्चन में वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है तो आप उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से आप अपना आंसर भी स्टार्ट कीजिए. तो यू हैव वाई हियर, तो आप वाई से ही स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पे आपने हैव लगाया, ठीक है,
हैज़ और हैव में आपने यहाँ पे हैव लगा, यू हैव यूज्ड हैव, वाई हैव, क्योंकि ये मी जो है, दिस मी इज दी व्हाट, दिस मी इज दी ऑब्जेक्ट, तो मी को इस साइड में लाएंगे तो आई हो जाएगा ना ये. इफ यू ब्रिंग मी ऑब्जेक्ट दिस साइड इट विल बी आई, एंड वी कैनॉट यूज हैज विथ आई. यू नेवर से आई हैज और हैज आई, वी ऑलवेज यूज हैव विथ आई. यू और आई के साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं. चलिए मैं आपको बता ही दूँ, प्लूरल्स के साथ हम हैव यूज करते हैं. विथ एनी प्लूरल नाउन्स वी यूज हैव, विथ यू एंड आई वी यूज हैव, विथ दे वी यूज हैव, और बाकी जितने हैं हम हैज़ यूज करते हैं. द रेस्ट, फॉर द रेस्ट वी यूज हैज़, बट फॉर दीज थ्री थिंग्स वी विल बी यूजिंग हैव. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. आई एम नॉट रबिंग इट, नोट इट डाउन. एट द एंड आई विल रब दिस थिंग. तो वाई हैव आई, मी यहाँ पे आई हो गया, वाई हैव आई बीन, बीन इज कंपल्सरी टू यूज, वाई हैव आई बीन called by, you is the subject, you comes this side, it is you only, and then question mark, because your sentence has ended with a question mark, you will also have to end your sentence with a question mark. Why have I been called by you? And after you solve the exercise, जब आप exercise solve करेंगे, please give a reading, एक बार read कर लीजिए. Alright, so that you can understand whether the construction of the sentence is proper or not. ठीक है, जो सेंटेंस अपने इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट किया, क्या वो प्रॉपर है या नहीं, एक रीडिंग आप कर लीजिए. वाई हैव आई बीन कॉल्ड बाई यू, परफेक्ट इंग्लिश. नंबर 5, ही हैड सॉल्व्ड दिस डिफिकल्ट सम. तो दिस डिफिकल्ट सम इज द ऑब्जेक्ट. हम लोग दिस डिफिकल्ट सम से ही स्टार्ट करेंगे. ऑब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग. वी हैव हैड हियर, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हैड अगर रहता है तो आप हैड से ही शुरू करेंगे और कुछ नहीं. If you have had in the sentence, you have to use only had, nothing else. ठीक है, because this is past perfect tense. Had is past perfect tense. तो this difficult sum had been solved by him. I have made a mistake here. It will be full stop, not a question mark. ये full stop होगा, ये question mark नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because here we have full stop. So we cannot use a question mark here. ठीक है, this difficult sum had been solved by him. He came this side. He is the subject. Subject जब लास्ट में आ जाता है तो वो him बन जाता है. मैंने वो लिस्ट आपको दिखाया था in the previous video. Please watch that video in case if you have not watched, because I've explained some general rules there in detail. ठीक है. Now let's come to number 6. Had he kept his promise? Question mark. So it has started with had. Same here, it has started with has, and it has started with, the sentence has started here with had. तो मैंने आपको ऑलरेडी इस एग्जांपल में बताया, अगर had है तो आप had से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ठीक है. तो had ऑब्जेक्ट his promise, been लगाएंगे, kept verb third form, had his promise been kept, by प्लस सब्जेक्ट, ही इस तरफ आएगा तो हिम बन जाएगा, ही कम्स दिस साइड बिकम्स हिम. हैड हिज प्रॉमिस बीन केप्ट बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यू हैव टू एंड इट विथ द क्वेश्चन मार्क ओनली. हैड हिज प्रॉमिस बीन केप्ट बाय हिम. एक रीडिंग मैंने दे दिया, आई हैव डन अ रीडिंग वंस, ओके, जस्ट टू चेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस. देन what had he done? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है? there is no object. is there any object? just what had he done? who is doing the action? he is doing the action, but what is he doing? that is not mentioned. ये यहाँ पे mentioned नहीं है तो object है ही नहीं. अब object अगर नहीं है तो नहीं है. if there is no object, fine, no problem, you skip that portion. let's come back to the formula. say, what is the question? What? So interrogative word. Say interrogative word is here and object is missing. There is no object. Fine then, no problem. From has, have, had, whatever there is in the question, you would simply jump to been and then verb third form and then by plus subject. अगर नहीं है तो नहीं है, आप जंप कर लीजिए. has, have, had से आप सीधा been पे जंप कर लीजिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है. if there is no object, no problem.
तो what had, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन वन ऑब्जेक्ट हियर, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो नो प्रॉब्लम, आई हैव जम्प टू बीन. देखिए मैंने हैड से बीन में जंप किया, यहाँ मैंने हैड से बीन में जंप किया. व्हाट हैड बीन डन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ही बिकम्स हिम. यहाँ पे ही जो है वो हिम में बदल गया. सो व्हाट हैड बीन डन बाय हिम. ठीक है ना. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट फाइन, नो प्रॉब्लम. इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, जस्ट जम्प टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द फॉर्मूला, जस्ट जम्प टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द फॉर्मूला, दैट्स इट. ठीक है ना. बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. अब नंबर 8 हम लोग देखते हैं. मैंने आपको कहा था कि हु अगर है तो आप किससे स्टार्ट करेंगे. मैंने शायद रब कर दिया, आई थिंक आई हैव रब्ड. Okay, no problem. No, let me just show you here, because there is who here, so for who it will be what, by whom, and for whom it will be who. इतना याद रखिए आप. तो who, we will start with by whom. तो यहाँ पे मैंने has और had से दोनों से एक्सरसाइज, instead of making a separate exercise, I have just shown you here with both has or had. तो अगर who has knocked at my door रहेगा तो आप आंसर लिखेंगे by whom has my door been knocked at. अब at word यहाँ से कहाँ से आया. at came from here. this is verb. मैंने आपको I had shown you in the first part 1 of the video, that if after the verb there is a preposition, at is preposition. If after the verb there is a preposition, then that preposition is not deleted. वो preposition आप delete नहीं करेंगे. ठीक है, वो preposition आप delete नहीं करेंगे. Don't delete that preposition. This one, don't delete the preposition. वो preposition आपको even in the sentence also you will have to use that preposition after the verb only. देखिए knocked is a verb and just after the verb we are using that preposition only. तो don't delete the preposition. तो अगर has से question पूछा आप कैसे लिखेंगे, how will you write? By whom has my door been knocked at? Question mark. And if this question begins with had, then in the same manner how will you write? If it begins with had, then how will you write? By whom had my door been knocked at? ठीक है, you're getting it. I'm sure you're getting it. Please practice more and more also, and watch the keep in mind the formulas very nicely. Number 9, which is the last example from today's video, is when had you finished the work. Interrogative word when, you will also begin with that same interrogative word when, and then you have to write had, because I already told you this is past perfect tense. This is past perfect tense, and when you see had you will put nothing else, only had. आप had को had ही लिखेंगे, and then the object, the work, this is the object, the work, when had the work, and then we put a been, when had the work been, verb third form finished, by plus subject, you is you only, you does not change, and then question mark. Why? Because this is interrogative sentence. So when had the work been finished by you. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए. और मैंने वॉइस चेंज के ऊपर एक एक्सरसाइज बनाया है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस बनाए हैं. Please go and watch. Actually, I did not put that in the grammar playlist. You can do one thing, just type in the YouTube. I told you in the last video also. Type in YouTube, just type active and passive voice Omni Gyan. Just type this thing and you will get all the exercises. You'll find a green color thumbnail. आपको ग्रीन कलर का पिक्चर दिखेगा, वही है. तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. वहाँ वो लाइव क्लासेस हो रहा था तब कोविड के टाइम पे, ड्यूरिंग लास्ट ईयर when I was taking online classes because of COVID-19 lockdown. So I had recorded that video actually for my students.
so that sometimes they don't get network, तो they can download offline also and they can study at home. इसलिए मैंने किया था. तो that's all. Okay, so remember these formulas very nicely. ये formulas आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा. ठीक है, these formulas, please remember the formulas very very nicely. ठीक है. So I hope you have understood. And if in case if there is any problem, and before your exams also we will be solving many exercises from English grammar class 10 के लिए मैं बोल रहा हूँ. तो ये वीडियो क्लास 9 से 12 तक जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में, इन योर सिलेबस यू ऑलरेडी हैव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ from classes 9 till classes 12. So class 11 12 students also can check out the grammar parts from here. Okay, so that's all I think, and if you have any problem, please feel free to comment me in the comment box. Okay, so that's all. Please subscribe to the channel, like and share the video with all your friends. With love from Omni Gyan, and all the best to all of you. Thank you.